Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 9 for Invincible 2.0 free course for BBA BBM BMS and BCA. अगर आप तैयारी कर रहे हैं MAH BBA BCA CET 2025 का या फिर CUET UG जनरल टेस्ट पेपर 3 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर 2025, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके एंड जीके में जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे दैट इज़ जनरल अवेयरनेस. सो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड वी आर गोइंग टू कवर 50 क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये सभी. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. सबसे पहली चीज़ बता देना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है सो डू ज्वाइन इट बिकॉज यहीं पे आपको नोटिफिकेशन, नोट्स, वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे. सो इसलिए आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन इन कर लीजिएगा. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. सो वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय. तो आपने अगर देखा हो तो बुक्स में हमारे पास में मोस्टली पेपर जो ब्राउन होते हैं उसका कॉमन रीज़न क्या होता है वो हमको बताना है. ओके, तो ब्राउनिंग ऑफ बुक्स, फ्रीक्वेंट यूज़, ओके, फ्रीक्वेंट यूज़, लैक ऑफ एरिएशन, कलेक्शन ऑफ डस्ट या ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज. ओके, तो इसका रीज़न क्या होगा हमको बताना है. ओके, ब्राउनिंग ऑफ पेपर का क्यों होता है. ओके, सो यहाँ पे इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज. अब हमारे पास में जो हमारा पेपर होता है दैट इज़ मेड आउट ऑफ अ वेरी कॉमन मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्यूलोज. ओके, सेल्यूलोज का बना होता है और वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है. ओके, देयर इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, ड्यू टू एक्सपोजर टू द सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स की वजह से उसमें एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से वो जो सेल्यूलोज होता है वो अपना कलर चेंज करता है टू समथिंग एज ब्राउन कलर. ओके, तो वो पेपर जो होता है येलो और ब्राउन होना शुरू हो जाता है. तो दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारे पास में ओल्ड बुक्स होते हैं उनका पेपर हमको ब्राउन कलर में देखने के लिए मिलता है. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु वॉज पॉपुलरली नोन एज अफ्रीकाज गांधी. सो अफ्रीकाज गांधी किसको मोस्ट पॉपुलरली बोला जाता है, मीर करजाई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी या MK गांधी. The right answer to this is option B, Nelson Mandela. Okay, this was a very simple and easy question. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेम ऑफ द बॉडी which has replaced the UN Commission on Human Rights. Okay, तो कौन सी बॉडी ने UN का कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया है, सेक्रेटरीट, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ओके, द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ओके, सो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज रिप्लेस्ड ओके द UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द Great Wall of China was built by. The Great Wall of China was built by which person? So over here options are Li Taipu, Qin Shi Huang, Lao Tse, Confucius. So the right answer to this question is Qin Shi Huang. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. In which year Colombia hosted the NAM summit? ओके, 1996, 1997, 1994 या फिर 1995. ओके, सो NAM summit when was it held by Colombia? So it was held in the year, okay, it was held in the year 1995. 1995 it was held. Next question, the Central Food Technological Research Institute CFTRI is located at Nagpur, Ernakulam, Mysore या देहरादून. The right answer to this question is option C. It's located in Mysore. Okay, it's located in Mysore. Moving ahead to the next one, head office of Coca-Cola company is in. Okay, so head office is in which place? ये हमको बताना है. Atlanta, Florida, New Jersey या फिर New York. Okay, so the right answer to this will be the right option is A, Atlanta. सो कोका कोला कंपनी का जो ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर्स या फिर कंपनी का जो हेड ऑफिस है दैट इज़ लोकेटेड इन एटलांटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस. जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन. तो इसका तो आंसर सभी को पता ही होना चाहिए. ओके, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ी ही होगी. ओके, सो अगर इसका देखें तो क्या होगा राइट आंसर. इसका द राइट आंसर शुड बी फॉर दिस वन, इट शुड बी ऑप्शन डी,
ग्रेट ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, मोस्ट कॉमनली इसको हम जानते हैं IISC के नाम से. तो वेयर इज इट लोकेटेड वो हमको बताना है. कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु. द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन डी, इट्स लोकेटेड इन बेंगलुरु. Moving ahead to the next one, who had played key role in formation of Lokpal Bill in India? Okay, who played the key role in formation of Lokpal Bill in India? बाबा आमटे, मेधा पाटकर, विपिन हजारिका या फिर अन्ना हजारे. The right answer to this option question is अन्ना हजारे. आप सब लोगों को पता होगा all the protests that went on for this bill. So Anna Hazare is the key person, okay, who played the role in the formation for Lokpal Bill in India. Moving ahead to the next one, which of the following devices is generally used to check multiple choice questions? तो multiple choice questions को check करने के लिए कौन सा device को use किया जाता है? MICR, barcode reader, OCR या फिर OMR. Okay, जो हम फॉर्म्स जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें कई बार हमारे पास में होता है ना कि हम ऑप्शंस को बबल आउट करते हैं. लाइक वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस एंड वी टेक आउट बबल द राइट ऑप्शन. सो विच टेक्नोलॉजी इज इट? ओके, दैट इज एन OMR टेक्नोलॉजी. तो उसको हम बोलते हैं OMR. ओके, moving ahead to the next one, which one of the following is an air to air missile? So which of the following is an air to air? Astra, Prithvi, Agni या फिर आकाश. Okay, which of the following Indian missiles is an air to air missile? तो considering the options over here, the option A, Astra. Okay, Astra is an air to air missile of India. Okay, next, flight recorder is technically called, what is a flight recorder called? Altitude meter, dark box, blind box, black box. ओके, द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, ब्लैक बॉक्स. जो हमारे पास में प्लेन्स होते हैं उसके अंदर एक रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट रिकॉर्डर, जो कि एवरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है. एंड इन केस ऑफ एनी लाइक अगर कभी उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए फ्लाइट में, सो इट्स ऑलवेज दैट ब्लैक बॉक्स इज सर्च्ड फॉर एंड उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है सो दैट वी कैन डिराइव द कंक्लूजन्स एंड इन्फॉर्मेशन कि किस रीज़न की वजह से ऐसा एक्सीडेंट या फिर मिसहैप हुआ था. ओके, moving ahead to the next one, National Library, the largest in India, is located in. So where is the National Library, जो कि सबसे largest library in India है? Where is it located? Kolkata, Chennai, Mumbai या दिल्ली? The right answer to this question is option A, Kolkata. It's located in Kolkata. Moving ahead to the next one, in cricket, a run taken when the ball passes the batsman without touching his bat or body is called. Okay, क्रिकेट में एक रन जो कि लिया जाता है जब बॉल डायरेक्टली बैट्समैन के पीछे चला जाता है. ओके, विदाउट टचिंग द बैट्समैन, नॉट टचिंग हिज बैट. ओके, तो बैट्समैन का ना बॉडी को ना ही बैट को टच करता. तो व्हाट इज इट कॉल्ड? ड्राइव, लेग बाय या बॉसी. सो इट्स कॉल्ड एज, ओके, द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन सी, बाय. इट्स कॉल्ड एज इन बाय. बर्नार्ड शॉ is the author of the drama. Okay, Bernard Shaw. Okay, George Bernard Shaw. Okay, so he is the author of which drama? बताना है. 12th Night, Arms and the Man, Death of a Salesman, Murder in the Cathedral. The right answer to this question is option B, Arms and the Man. Okay, moving ahead to the next one. Gol Gumbaz, the largest dome in India, is located in the state of dash. ओके, गोल गुम्बज जो लार्जेस्ट डोम इन इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है बताना. बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका. ओके, नेक्स्ट वन, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन. नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो December 24, September 25, October 25 या फिर November 25. इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, it's observed on December 24. Moving ahead to the next one, yen is the currency of dash. Okay, yen कौन सी कंट्री का करेंसी है? यूगोस्लोवाकिया, मेक्सिको, जापान, थाईलैंड. The right answer to this is it's a currency of, okay, yen is the currency of Japan. Moving ahead to the next one, which one of the following is a surface to air missile of India? Okay, कौन सा मिसाइल ऑफ इंडिया है जो कि सरफेस टू एयर टेक्नोलॉजी पे है? सो त्रिशूल, K-15 सगारिका, ब्रह्मोस या फिर अग्नि. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, त्रिशूल. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, नेहरू ट्रॉफी is associated with football, hockey and the boat race, kabaddi,
या फिर टेबल टेनिस. नाउ नेहरू ट्रॉफी is given for, okay, hockey and boat race. Okay, next one. Odissi classical dance is originated in, so in which state ओडिसी originated, इसका हमको बताना. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. सो इट हमको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इट्स originated from Odisha. Okay, next, moving ahead. Who discovered America? This is also a very well known question, पर फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं. वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या फिर Amundsen. Okay, so the right answer to this is option B, Columbus. Moving ahead to the next one. The famous painting Mona Lisa was creation of. Who created the famous painting Mona Lisa? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso या फिर Van Gogh. So the right answer to this is Leonardo da Vinci. Next one. The first woman to swim across 7 important seas is. The first woman who swam 7 important seas in the world is Chandini, Bula Chaudhary, Mridula Rajiv, Priya Shanbhag. The right answer for this question is Bula Chaudhary. Okay, so she traveled, or rather she swam the 7 important seas in the world. Next, who said that India's soul lives in villages? Vinoba Bhave, Jayaprakash Narayan, Mahatma Gandhi या फिर Nehru? The right answer to this question is, it was said by option C, Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi said that India's soul lives in villages. Moving ahead to the next one. The headquarters of WTO, that is the World Trade Organization. Okay, it's located where? New York, Doha, Uruguay या फिर Geneva. The right answer to that is option D, Geneva. It's located in Geneva, Switzerland. Okay, the headquarters of WTO. Which state is called the rice bowl of India? So which state is called as the rice bowl of India? Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala या फिर Karnataka? The right answer to this is option, okay, the right answer to this is option A, that is Andhra Pradesh. Okay, so Andhra Pradesh is known as the rice bowl of India. Flight recorder is technical. Okay, a repeated question. It's called as a black box. Okay, moving on to the next one. Which of the following countries has entered into an agreement with India for the supply of advanced jet trainer, that is Hawk? Okay, which country has got into an agreement with India? So the right answer to this will be option B, United Kingdom. Okay, United Kingdom has got an agreement with India for advanced jet trainer, that is the Hawk. Okay, moving ahead to the yuan is the currency of which country? Yuan is the currency of which country? Japan, China, Italy या फिर Yugoslavia. Okay, so the right answer to this is, it's in currency. Yuan is the currency of China. Okay, so option B. Santosh Trophy is associated with hockey, football, basketball या फिर badminton? इसका right answer है B, football. It's associated with football. Next question is, Kathakali classical dance originated in which state of India? Okay, Kathakali classical dance is from which state of India? तो इसमें अगर हम देखें तो केरला, कर्नाटका, राजस्थान या फिर तमिलनाडु. The right answer to this is option B. It's originated from Karnataka. Okay. Next. The 16 years old boy Arjun Vajpayee, who became the youngest Indian to successfully climb the world's highest peak, Mount Everest, on May 22, 2010, is from which state? Okay, so the youngest old boy, okay, 16 years boy, that is the Arjun Vajpayee, who has climbed the Mount Everest, is from which state? Okay, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, National Capital Territory of Delhi या फिर Uttarakhand? The right answer to this is option A, that is Uttar Pradesh. Next, which one of the following is an air-to-air missile? Once again, we have got air-to-air missile. So, ये repeated question है वैसे. Astra is an air-to-air missile out of the all given. Okay. Who presented the first union budget of independent India? The first union budget of independent India was presented by which person? Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, R.K. Shanmugam Chetty या फिर Dr. Ambedkar? The right answer to this will be option C, R.K. Shanmugam Chetty. Next question. Antara is the news agency of which country? Okay, Antara
Antara or Antara is the news agency of which country? Saudi Arabia, Indonesia, Japan or Russia? The right answer to this will be option B. It's from Indonesia. Okay, next. Reuters is the news agency of United Kingdom, Canada, France or none of these. Okay, so Reuters is a news agency of United Kingdom. Okay, next. Xinhua is the news agency of North Korea, Japan, China or South Korea. Okay, so Xinhua is from which country? That is from China. Okay, so option C, China. The holy city Kedarnath devastated due to cloudburst, earthquake, bombing, over commercialization. So what was the reason when we had a mishap in the Kedarnath, holy city of the Kedarnath? So what was the reason behind it? So the reason behind it was of cloudburst. Okay, moving ahead to the next one. Sabavon is the news agency of Turkey, Egypt, Afghanistan or Kazakhstan. So right answer to this is option C, that is Afghanistan. So Sabavon is the news agency of Afghanistan. Who one among the following ex-chief minister did not go to jail in scamser corruption charges? Okay, so scamser corruption charges mein which of the following minister did not go to jail? Om Prakash Chautala, Lalu Prasad, Mayawati, Madhu Koda. Right answer to this is option C, Mayawati. Okay, so Mayawati did not went to jail for the scamser corruption charges. Moving ahead to the next one. World famous book Das Kapital was written by Angela, Karl Marx, R.C. Datta or none of these. Right answer to this is option B. Okay, option B, it was written by Karl Marx. India won Champions Trophy 2013 under captainship of. Okay, so in the 2013 when India won the Championships Trophy, who was the captain? Virat Kohli, MS Dhoni, Ravindra Jadeja or Shikhar Dhawan? Right answer to this is option B, that is MS Dhoni. What is called dedicated freight corridor? What is dedicated freight corridor? Railway truck. Okay, railway truck for freight movement, road link for freight movement, a business hub of Uttar Pradesh, none of the above. So the right answer for this is option A, that is railway truck for freight movement. Okay, moving for the next one. Who was the first railway minister of independent India? So independent India का first railway minister कौन था? Morarji Desai, John Mathai, Sachidananda Sinha, Dr. Ambedkar. The right answer to this is option B, that is John Mathai. Next, the term Grand Slam is associated with which one of the following game? Which one of the following game के साथ में Grand Slam word use किया जाता है? Cricket, swimming, tennis या badminton? The right answer to this is option C, that is tennis. Okay. How many countries are permanent members of the Security Council of the United Nations Organization? 4, 6, 5, 7. How much it is? The right answer to this is option C, that is 5. So 5 countries are the permanent member of the Security Council of United Nations Organization. Mary Kom belongs to which sports? Easy question. Wrestling, boxing, shooting, badminton. The right answer is option B, boxing. Moving to the last question. The name of the White Revolution is associated with K. Rangarajan, Varghese Kurian, MS Swaminathan, JV Narlikar. The right answer to this is option B, Varghese Kurian. Okay, so this is the right answer for this. So these were the 50 questions for general awareness for today. Okay, for more such questions, don't forget to subscribe us. Okay, don't forget to subscribe us. Also, you'll get the worksheet in WhatsApp and Telegram, so don't forget to download and join that as well. Okay, so meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.